और उत्तर प्रदेश के एमपी के नाते मैं आपको भरोसा देता हूं कि उत्तर प्रदेश की आज की सरकार, उत्तर प्रदेश की आज की ब्यूरोक्रेसी प्रगति के राह पर दृढ़ संकल्प होकर के चल पड़ी है, वो आपके सपनों को साकार करने के लिए। पूरी डेलीगेशन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाला हर निवेश न केवल सुरक्षित होगा बल्कि निवेशक के लिए फलदायी बनाने में राज्य सरकार अपनी पॉलिसी के अंतर्गत भरपूर मदद करेगी। To Uttar Pradesh, where vision meets execution, and excise reforms have redefined industrial development. In the last 10 years, the UP Excise Department has seen a record-breaking growth. From just 60 distilleries, we now have over 89 operational units driving employment, exports and ethanol blending. हमने पिछले 7 वर्ष के माननीय यूपी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में आबकारी राजस्व को 14,000 करोड़ से 52,500 करोड़ तक पहुंचाया और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो आबकारी विभाग में थी उसको हम लोगों ने इन्वेस्टर के अनुकूल बनाकर काफ़ी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स भी हम लोगों को मिले। विभाग करीब 8,000 से ज़्यादा करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हम लोग कर चुके हैं और इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे इन्वेस्टर्स हैं जो उत्तर प्रदेश में आकर अपनी डिस्टिलरीज, वाइनरीज और भी तरीके की इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। इन्वेस्ट यूपी हमारा पार्टनर है जो बताएगा कि और क्या सब्सिडी और क्या फैसिलिटेशन गवर्नमेंट ऑफ यूपी इन्वेस्टर्स को दे रही है। साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि आज हमारा प्रदेश कंज्यूमर स्टेट को की अपनी छवि को छोड़कर प्रोडक्शन स्टेट की ओर बढ़ा है। आज हम देश में सबसे ज़्यादा एथेनॉल बना रहे हैं, हमारा रेवेन्यू उसी लेवल पे उसी हिसाब से बढ़ रहा है। तो हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी क्योंकि हमारा जो ब्रांड है, यूपी का जो ब्रांड है वो अन्य देशों में भी जाए, अन्य प्रदेशों में विदेश के जाए। तो हमारा फोकस ये भी है कि हम कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें प्रदेश में। From single window license approvals from Nivesh Mitra, UP Excise has adopted digital first governance to enable ease of doing business. The success of UP's excise reforms has been made possible through seamless coordination between leadership, administration, and departments. Between 2016 and 2025, Uttar Pradesh portable distilleries doubled from 20 to 40, while capacity soared from 37 to 80 crore bulk liters, reflecting massive private sector investment. Alcohol production in UP grew from 732 to 2,369 million liters between 2014 and 2024. Portable consumption rose steadily while exports increased nearly 4 times. UP is at the forefront of India's ethno-revolution. In 2021-22, UP produced over 11,500 million liters of ethanol. By 2023-24, this grew to over 18,000 ml. Sales rose sharply. Excise revenue in UP rose steadily from 14,000 crores rupees in 2015-16 to over 52,000 crores rupee in 2024-25. A testament to efficient governance, progressive excise policy. The potential of fruit-based wine is attracting industry players. UP with its rich fruit harvest is now making wines like cider from white apple, sherry from apple, and perry from pears under new rules. The UP Excise Department has helped bring in big investments. 137 MOUs worth 39,700 crores, creating over 72,000 jobs. So far, 10,184 crores rupees have already been invested, including ready-to-start projects and new distilleries. This is a strong step toward making UP a $1 trillion economy.
UP Excise has emerged as a role model for other states, with officials from Odisha, Punjab, and Karnataka recognizing its reforms.